fine. So till the time the rest of the people are joining, so I would like to welcome you all. Welcome to Tree Campus. As you know, Tree Campus is the platform which gives an opportunity to learn, read, write English. मोबाइल में बात कर देगा. Rupali, please mute yourself, dear. All right. So I was talking about Tree Campus. So you can join our session from 5:30 to 6:30 p.m. Please download Tree Campus app from your Play Store. You can also subscribe our YouTube channel. And one more thing I would like to request from all my students so that usually I came live on Instagram also. So please like and subscribe. Please like and follow our Instagram channel. Same goes with Facebook also. So please like and share our Facebook post. Okay. I hope so. You people will do the needful, and whosoever is needed, please recommend these classes to them. Monday to Friday, 5:30 to 6:30 p.m. All right. So there are some requests that ma'am we need to change the timing, the timings we have to do. So is it good that I'm going to shift the timing from 5:30 to 5? So is it okay for everyone from 5 to 6? Because frequently I'm getting requests that ma'am, can you please change the time? So can I make it from 5 to 6? All right. Rupali has joined again. So yes, first let me ask Pritha. Pritha, how are you? Unmute yourself. Let's communicate with me in English. How are you, Pritha? Hello, Pritha, are you there? Are you there, Pritha? Okay. Rupali, are you there? Yes, ma'am. Okay, how are you? Tell me about your day. How was your day? What have you done so far? Ma'am, I'm feeling over the moon. And you? Yes, you're feeling over the moon. And why it is so? Ma'am, because today one competition was organized in our college and I got third position. That's why. Wow, what kind of competition was it? Ma'am, that was writing competition on the issues. Very good. What was the topic? Ma'am, topic was global warming. That's interesting. So global warming. So somehow you also know that climate changing. What according to you is responsible? Ma'am, I think for our environment change, what kind of changes we are seeing in our environment, so we are also responsible. Yes, somehow, somewhere, we people are also responsible for this climate change. Acha, have you heard about huge rain in Dubai? Yes, ma'am, I have heard about that. Dubai is facing a flood. Dubai is facing a flood. Don't you know that Dubai is a country जहाँ पे बारिश बहुत कम होता है Yes, और वहां ma'am, पे we were फ्लड आ रहा है. talking on this topic. Yes, ma'am, today our teacher was discussing this topic. So you can understand everything, but the calculation of weather, calculation of climate changes that is happening, मतलब beyond your expectation. ठीक है. आप जो सोच रहे हैं मतलब कि इसीलिए बोलता है ना, डोंट प्ले विथ नेचर. इफ नेचर कम्स टू इट एक्सटेंट ना, ही विल स्टार्ट प्लेइंग विथ यू ना. तो फिर नेचर इज डजंट हैव एनी लिमिट. ठीक है. जिस देश में बारिश नहीं होता है, जहाँ पे बारिश को करवाने के लिए वहां पे बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, वहां पे बाढ़ आना, वहां पे फ्लड का होना, डोंट यू थिंक सो दैट इज वेरी अनयूजुअल? व्हाट डू यू थिंक सो? यस, कीर्ति. हाय एवरीवन, दयावती, नरेश, विकास. हेलो एवरीवन.
So today, why I'm discussing today again, the topic is not the group discussion. I have just initiated a conversation with Rupali. So yes, today topic is business English, and today I specifically will tell you how you people will prepare for interview. And students, you don't need to worry that ma'am, we are students. Although you people are students, but you have to keep in mind that whenever you people will start working, or it doesn't mean that if in interview that you will only prepare for these kind of questions. In You have to prepare to keep in mind how to tackle these kind of questions. अब जो बच्चे हैं, जो 7 में है, जो 8 में है, जो 9 में है, जो बोर्ड में है, वो बोलेंगे कि मैम हमें इंटरव्यू की क्या जरूरत है। इंटरव्यू क्वेश्चंस ये देखो, आपका ना स्टैंडर्ड चेंज हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप 9 से 10 में जा रहे हो, कभी दूसरे स्कूल में जा रहे हो, या कहीं ऐसी जगह जा रहे हो जहां पे यू हैव टू फेस सर्टेन सिचुएशन, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर योरसेल्फ प्री हैंड। ठीक है, आपको प्रिपरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो टुडे आई स्पेसिफिकली will tell you that how to what could be the possibility of these questions of interview, and how you can tackle the interview, how you're going to handle the situation। ठीक है, कैसे आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, what should be the question, what is the possibility of getting selected by the interviewer, how to impress your interviewer in a very first round. So everyone ready? Are you all excited? Yes, ma'am. Too much excited. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Because I can see there are many work professionals here, right? अपना So those who have not I always unmuted. worry that when my college will start after 4 year, when my college will start placements, they will conduct an interview session. How I will perform. You will perform better, Rupali, don't worry. I totally believe that you will excel in your interview, so don't worry. Have some faith in me and keep working hard. Okay. So there are something which you need to keep in mind. How many of you have joined the classes? I think I have told you how to give your introduction. So the very first question about the interview. Are you all ready for the class? Are you all prepared for the class? Yes, Mentally ma'am. ready? जो लोग ये Yes, सोच ma'am. रहे हैं ना कि इंटरव्यू के सवालों क्या हमें क्या जरूरत है, मैम हम तो बच्चे हैं। अरे आज बच्चे हो, कल तो बड़े होगे ना, कल इंटरव्यू हैंडल करना सीखना है ना। आप ये मत सीखो कि ये कंपनी में कैसे हायरिंग करनी है, या ये आप सीखो कि कैसे किसी भी सवाल का कॉन्फिडेंटली जवाब देना है, बिना किसी हेजिटेशन का, विदाउट हेजिटेशन। हाउ टू आंसर एनी क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली, यू हैव टू लर्न द कॉन्फिडेंस, you have to learn the communication, you have to learn the fluency approach. Understood? So before going to start the class, going to start the actual class, जैसे कि मैं अभी एक्स्ट्रा ज्ञान दे रही हूँ, तो आज फिर मैं एक एक्स्ट्रा ज्ञान देना चाहती हूँ। देर आर सर्टेन वर्ड्स विच आर प्रोनाउंस्ड बैडली, मतलब इनकरेक्टली। ठीक है, तो मैं पहले अब वो वर्ड बोलूंगी और वन बाय वन आप लोग सब जो है, ठीक है, उस वर्ड को आप लोग मुझे बताओगे कि आप लोग इसको कैसे पढ़ते हो, हाउ यू पीपल प्रोनाउंस दीज वर्ड। वेट अ मिनट, चलो। नहीं आते तो हम बता देना। All right, mute yourself, everyone. So the very first word is EXECUTIVE. Let's start with Kirti. Kirti, unmute yourself. Good evening, Janvi. Yes, ma'am. Kirti, can you see my screen? Good evening, ma'am. Good evening, Kirti. What Yes, is ma'am. written on the screen? Kirti, read it. Executive. All right. Kanika, over to you. Kanika. Kanika Sabu, Yes, ma'am. read it. Okay. Executive. Okay. Janvi.
Ma'am, executive. Next, Pritha. Pritha, where are you, Pritha? Yes, ma'am. Yes. Read it. Executive. Oh, next, Rupali. Executive. Okay, next, Dayavati. Executive. Okay, next, Megha. Ma'am, executive. Executive. Huh? Executive. Okay, next, Naresh. Ma'am, it's called executive. Okay, last, Vikas. Okay, we have Janvi also with us. Vikas and Janvi. First, Vikas. Vikas. Okay, Vikas is not there. Janvi, what is Ma'am, the word called? executive. You all have pronounced it incorrectly. It's not executive, it's executive. What? Executive. It's not executive. The word is pronounced as executive. Understood? All right. Executive. Ma'am, executive. 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 एग्जीक्यूटिव यस एग्जीक्यूटिव ठीक है Executive. इसको एग्जीक्यूटिव नहीं बोलते हैं इसको एग्जीक्यूटिव नहीं बोलते हैं द वर्ड इज प्रोनाउंस एज एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव ठीक है चलो अब दूसरा वर्ड ठीक है सेकेंड वर्ड इज वेट अ मिनट COUPON चलो what is this word called who will tell me the correct pronunciation of this word Naresh Ma'am, can I? Ma'am, yes go ahead Kanika Coupon. wrong next Can I say, ma'am? yes go ahead Coupon. हाँ Coupon. ठीक है चलो next Ma'am, coupon. who Coupon. said this Mega absolutely right it's coupon don't write Ria who is Ria here if any new student has joined hi Ria kindly don't write on the screen here don't write it on the screen Ria please don't write it on the screen okay please connect yourself with the audio all right so next word next word is wait a minute CACHE what is this what is this word who will tell me the correct pronunciation of this word yes I think it's cash. Cash. all right no it's not catch it's not catch it's cash what it is in all Cash. over the world this word is pronounced as cash all right so my question for you all is whenever you go to a restaurant you order your food and you love the food so while you go
and ask for the bill, what is that particular word? What is the another word for the bill? Its spelling is RECEIPT. What is that word? Receipt. Huh? Receipt. It's receipt. Receipt. ठीक है? Or receipt you can say. Receipt. Don't ever say receipt. प का यूज नहीं होता है. There is no use of P. Okay? It's receipt. Understood? तो चलो आज के लिए इतना ज्ञान काफी है. So now let's start your actual class. So yes. So first of all, before I'm going to show my slides, so how many of you have how many of you were present in the class where I taught you how to introduce yourself and you have to keep 5 points in the mind? I think Rupali, Dayavati, Pritha were there, right? So let's start with Dayavati. Dayavati, are you there? Yes, ma'am. I'm there. Hi, Dayavati. I'm Good there. evening. Dayavati, please tell me what are the first you need to tell me what are the 5 points that we need to keep in mind while we are giving our introduction, especially to the interviewer. मतलब introduction generally किसी party में नहीं, एक formal introduction. How to give your formal introduction? What are the 5 things that we need to keep in mind? I have taught you this. Firstly, we tell my name, and after that, how to belong. Where Where do you where? where do I belong? And third Hmm. is my hobby, Hmm. and fourth is my strength. Hmm. You're forgetting about your educational qualification. Third, yes, ma'am. Third number is education qualification, and fourth is hobby, and fifth is uh, strength. All right, there are multiple things. Okay, I think Rupali will tell. Ma'am, Yes, Rupali. Yes, ma'am. Yes, Rupali. Over to you. What are the 5 things? So What are the 5 we have essential things you have to tell me? points. Yes, Ma'am, Rupali. first is I'm greetings. listening. We Greetings. have to Hmm. greet our interviewer. this is breaking. Pritha, you need to keep yourself mute right Second now. is, Rupali is speaking. Yes, Rupali. ma'am, after greetings, we will tell about our name and from where we belong to. And third From where we belong to. is Yes. our Your voice is your voice. You're losing your educational voice, my dear. qualification. You're losing your voice. All right. Yes. Yes, Pritha, now you can talk. Okay. Yes. First, What are the 5 essential things? first is greeting. Audible. First is greeting. Hmm. Hello. Yes, Hello. Pritha. Pritha, Okay. you are all completely audible. Rupali, First, mute first, yourself. Hmm. first Go is ahead. greeting, and Hmm. second is name. Third is education. Fourth is hobby, and five is strength. That's it. Hello. That's it, Pritha. So you have not stated the order is not what I have taught. All right. So now everyone listen to me very carefully. We have Pritha, Dayavati, Janvi, Kanika, Kirti, Megha, Naresh, Rupali. Vikas, I don't know where is Vikas. Okay. So yes, so the very first points that we need to say, the very first point that we need to maintain, that we need to keep in our mind is greetings. Whether it's good morning, good afternoon, good evening, जिस टाइम पे भी आपका है,
ठीक है, you have to take care of the timings, that at what time your interview is scheduled. ठीक है, so first of all, do not forget or don't forget to wish them greetings. Second is your name. Hi, good evening. My name is Pooja Singh. ठीक है, next is location. You have to tell them about the place from where you belong. Okay, ठीक है. Second is your educational qualification. Since it's a formal interview, so you have to inform them that what is your qualification, why you are qualified, how much you're qualified for this role, for the opportunity they are looking for, whether you are qualified for the role or not, whether you are qualified for the position or not. Educational, we are done with educational qualification. If you have any work experience, अगर आपके पास कोई work experience है, so just after education qualification you have to add this also. ठीक है, so you have to add your work experience. Right now I'm talking about formal interview. वो इंटरव्यू जो आप ऑफिस में जाके देते हो, whenever you have to get a job. ठीक है, first greetings, then your name, then the location, then your educational qualification, then your work experience. After this, when you're done with all formal things, now come to your hobbies. What are your hobbies? If you're done with your hobbies, please tell them about your strength and weakness. Don't, ये जो है हमेशा जो है होता क्या है ना, कि हम लोग अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताने लगते हैं कि दैट वी आर फैमिली ऑफ 4, वी आर, हाँ वो बताना है, लेकिन तब तक नहीं जब तक इंटरव्यूअर ना पूछे. ठीक है, आपको ये तब तक नहीं बताना है जब तक आपसे पूछा ना कि व्हाट, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, और मतलब व्हाट इज योर फैमिली बैकग्राउंड, हाउ मेनी सिस्टर्स यू, हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव. तो जब तक वो खुद ना पूछे अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है, वो तब तक आपको नहीं बताना. यू डोंट नीड टू टेल, द पर्सन only wants to know about you. So you have to specify the details about you. ठीक है, और एक बात और भी ध्यान से सुनना, वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट योर स्ट्रेंथ ना, तो वो घिसा पिटा जो आपने लिखा है ना, ठीक है, वो मत बोलना. जब वो अपने स्पेसिफिकली जब आप स्ट्रेंथ को बोलते हो ना, तो अपनी एक ऐसी क्वालिटी को हाईलाइट करो जो कि आपके रेज्यूमे में नहीं है. It is not in your resume, so you have to highlight a great quality. For example, Dayavati. Dayavati loves to recite poems. She loves to recite. She loves to write or narrate short story. So this is the quality which she has, and she can highlight this quality while talking about the strength. Okay, Rupali is very fascinated about public speaking. He loves public speaking. He loves communicating with people. So you have to highlight these things whenever you're talking about your hobbies. These can be your hobby, sorry, whenever you're talking about your strength. So always try to highlight your strength, because the interviewer wants to know what is that one unique thing. You can also call it USP. What is that one unique thing which he or she may find in you? तुम्हें वो ऐसी कौन सी बात है, ठीक है, जिसके लिए वो तुम्हें हायर कर. व्हाट इज दैट वन पॉइंट. ठीक है, तो वो वन पॉइंट आपको खुद ही देना है उसको. ठीक है, आप खुद ही मौका दो उसको, कि आप उसको ये फाइंड आउट करने का मौका दो कि आप में ये एक खूबी है जिसके लिए कंपनी को मेरी जरूरत हो सकती है. चलो, अब पहला इंट्रोडक्शन कौन देगा भाई? आपने पांचों ने सुन ली. फर्स्ट ग्रीटिंग्स, देन योर नेम, ठीक है, उसके बाद लोकेशन, कहाँ से बिलोंग करते हो, ठीक है, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके बाद अगर है तो वर्क एक्सपीरियंस की बात करो, और अगर नहीं हो तो बोलो आई एम अ फ्रेशर. उसके बाद टॉक अबाउट हॉबीज, देन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. दैट्स इट. नेक्स्ट क्वेश्चन उनका होगा कि टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली. उसके बाद यू हैव टू टेल दैट वी आर अ फैमिली ऑफ 5. वी आर 2 सिस्टर्स इंक्लूडिंग मी एंड अ सिंगल ब्रदर. ठीक है, both my siblings are working and working in a very good company in different positions. ठीक है, my father is a government employee. Whatever, मतलब जो भी डिटेल्स है, जो भी फैक्ट है, वो आपको बताना है. ठीक है, but wait for the interviewer that he must ask a question related to your family.
until and unless you just need to inform or specify about yourself. Understood? समझ में आया सबको? Everybody has understood what I need to say? Yes? चलो, मुझे सिर्फ एक थम्स अप मिला है. मैम Yes? Yes, ma'am. Yes. 3. देवती ने थम्स अप दिया है, जानवी ने दिया है, nobody else has given. All right. रूपाली नहीं समझ में आया, प्रीता को नहीं समझ में आया, नरेश को नहीं समझ में आया, मेघा को नहीं समझ में आया, कीर्ति को भी नहीं समझ में आया. मैम मुझे कुछ पूछना है. हाँ, पूछिए. मैम You are open to अगर ask. मैम कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या बोलते हैं? I'm a fresher. फ्रेशर. Fresher. Yes, I'm a fresher. ठीक है, मतलब कि मैंने अभी तक अपना काम स्टार्ट नहीं किया है. ठीक है, मैं अभी फ्रेशर हूँ, मेरा कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं. गॉट इट देवती, वेरी गुड. चलो, हु विल स्टार्ट द इंटरव्यू? लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. दो तरीके से क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल राइट, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. ये पहला सवाल हो सकता है. दूसरा दूसरा सवाल हो सकता है ये, गिव मी योर इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. और हाँ, कल मैंने आप लोगों को एक चीज लिखाई थी ना. कभी कभी आजकल ये हो रहा है, जस्ट टू, मतलब कि टू ईज द इंटरव्यू, आजकल लोग जैसे ही आप घुसोगे ना, पूछते हैं हाउ आर यू. पूछते हैं ना हाउ आर यू. सो आई एम फाइन इज क्वाइट बेसिक. अगर आप आई एम फाइन बोलोगे ना, तो बात वही खत्म हो जाएगी. आई एम फाइन, वेन एवर यू हैव टू से हाउ आर यू, काइंडली ट्राई टू मेक रूम फॉर द एक्स्ट्रा कॉन्वर्सेशन. मतलब कि और ज्यादा बात करने के लिए मैंने जो कल आपको लिखाया था ना, उस तरीके से जवाब दिया करो. ठीक है? हाउ आर यू, अगर वो इंटरव्यू, लेकिन ये तभी करना है जब आपसे इंटरव्यू पूछे कि हाउ आर यू. ठीक है? अगर नहीं पूछता है तो कोई जरूरत नहीं जवाब देने की. ऑल राइट, हु विल स्टार्ट द इंटरव्यू? हु विल गिव देयर इंट्रोडक्शन? रेज योर हैंड. फर्स्ट, ऑल ऑफ यू प्लीज पुट डाउन योर हैंड्स. जिन दो लोगों ने भी किया है, पहले अपना हाथ नीचे करिए. चलो, मुझे बताओ कौन सबसे पहले देगा? विकास, क्या हो रहा है? आज सुमित ने ज्वाइन नहीं किया है. All right, let's start with Janvi. Hi, Janvi. Hi, Janvi. Yes, ma'am. Janvi, Hello. are you the? Janvi, introduce yourself. Hello. Yes, Janvi, introduce yourself. Am I audible to you, Janvi? Am I audible to you, Janvi? Yes, ma'am. So please introduce yourself. Start. Yes, ma'am. Introduce yourself, dear. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Good evening, everyone. First of all, thank you, ma'am, for giving me this opportunity to introduce myself. I'm Janvi. I'm from Delhi, and I have completed my 12th standard from Government Coed Senior Secondary School, and I am preparing for my entrance exam. My hobby is I am my hobby is listening a song, and my strength is I am good listener. Thank you. Very good. You have followed the correct sequence. Since you are not working and you are a student, so you have not added any work experience. So, but since right now we are preparing for interview, so you can say that I'm a fresher. ठीक है? All right. Who will come next? Janvi is done. Janvi, you can lower your hand. Yes, Kanika. उसके बाद दयावती. Yes, ma'am. Can I start? Yes, Kanika. Yes, Kanika, you can start. Okay. Hello. Good evening, ma'am.
My name is Kanika Sabu. I am from Sikar, Rajasthan. I am complete my 10th class from Yes Public School, and I am I am a fresher. Thank you. You have not talked about your hobbies, your strength, your weakness. My hobby is read to general books, general knowledge books. My hobbies is to Read general knowledge books. My hobbies is to read general knowledge books. All right. Very Okay. interesting hobbies you have. Okay. You need to work something where, you need to work on your pronunciation and you are in quite hurry, my dear Kanika. So please try to relax. Okay. If you Okay, really ma'am. want to enhance your communication and you have to be very much relaxed. Understood? All right. Yes. Next, Rupali. Yes, ma'am. Am I audible, ma'am? You're audible, but your voice is cutting out, my dear. Ma'am, I'll start after some time. I'll start All introducing. right. Let's start with Dayavati then. Yes, Dayavati. Yes, Dayavati. Yes, ma'am. Yes. Good evening, ma'am, and thanks to you given a golden chance to speak here. So, my name is Dayavati. I am from Delhi. I have multiple degrees. Highest degree is B.Ed. My hobbies are reading, writing, teaching, speaking, and recite poems. My greatest strength is open, uh, learn, learn everything and apply these things My greatest instinct to learn everything and apply in on my daily life. Right? on my daily life. All right. Very And good. my That's a very weakness interesting habit. is, What? and my weakness is uh, very emotional towards anybody and pity uh, for everything, for every person. Okay. All right. I got your point. Very well said. Enhance your communication. बातचीत नहीं हो रही लगता है आजकल. Mm, Practice करना है होगा दयावती. चलो. okay. Kirti. Over to you, my dear. Kirti. Kirti. Yes, Kirti. Are you there? Are you there, Kirti? Okay. Yes, Kirti, introduce yourself. You Yes, have ma'am. to keep 5 points in mind. Yes, ma'am. First, okay. Okay, Kirti, go ahead. Introduce yourself, Kirti. Okay, ma'am. Good evening, ma'am. My name is Kirti. I am belong to UP. I am completed to 10th CBSE board from Delhi. I am I completed have 12th completed CBSE my, board to Delhi. I have, I wait a am minute, completed wait a minute. master degree from IGNOU Am I not University. audible to you, Kirti? Am I not audible to you? Yes, ma'am. So you have to say, I have completed my board examination or I have completed my 10th and currently I'm doing this. You can start this, you can start from here. ठीक है चलो फिर और क्या बोलना है Okay, ma'am. yes I'm waiting for you मैम उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस है. you have to tell me ना
Tell me if you have Okay. any work experience, then you can add. Yes, ma'am. Yes. Go ahead. Uh, I experienced 2 years from teaching. Uh, Okay, Kirti, have you worked as a teacher somewhere? Have you worked as a teacher somewhere, Kirti? yes, ma'am. All right. So, Kirti, I would like to tell you how to say that your work experience, how to add your Yes, word ma'am. experience. So, you will say that I am working or I have worked for 3 years as a primary teacher or as a senior teacher. You will say like this. I have worked for a couple of years. Couple of years का मतलब है 2 साल. I have worked as a primary teacher. ठीक है, for 2 years, or either you can say 2 years or for a couple of years. Yes, ma'am. ठीक है, जो भी अगर कोई स्कूल है तो स्कूल का नाम ले लो. और अगर आप फ्रेशर हो, अगर आपने कहीं काम नहीं किया है, तो आपको बोलना Okay, है ma'am. कि आई एम अ फ्रेशर. और कीर्ति, आपने ध्यान से सुना नहीं. फर्स्ट, गुड इवनिंग मैम, माय Yes, नेम ma'am. इज कीर्ति. सेकंड, आई एम फ्रॉम दिस प्लेस, वो आपने सही बोला. थर्ड, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन और आई डिड माय ग्रेजुएशन इन दिस पर्टिकुलर फील्ड. ठीक है, या मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. उसके बाद अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद यू हैव टू ऐड ऑन योर वर्क एक्सपीरियंस. आफ्टर दैट यू हैव टू टॉक अबाउट योर हॉबीज. हॉबीज में लिसनिंग म्यूजिक, डांसिंग, वट एवर यू वांट. ठीक है, फिर आपको अपने स्ट्रेंथ को हाईलाइट करना है कि दैट आई एम वेरी गुड इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आई एम वेरी गुड इन डांसिंग, आई एम अ वेरी good narrator of any event, I'm a very good leader, I have this leadership quality. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. चलो ठीक है, वेरी गुड. मेघा. मेघा. Yes, ma'am. यस मेघा. Uh, Hello, everybody. Good evening. Firstly, I would like to say thanks a lot to ma'am who gave me such a nice and wonderful opportunity to introduce myself in front of you. My name is Lekha. I dwell at Rajveer Colony, Delhi. I am pursuing my graduation from Delhi University Vivekanand College. I feel delight in reading different books, listening music, and visiting different places. I feel so glad to go historical monuments. Mm, and my ambition of life is to become an IAS officer. And I'm a girl of good manner and positive attitude. I'm hardworking, helpful, friendly by my nature. I also like to do Madhubani painting, which is most popular in state of Bihar. I have made so many paintings which is hang over in my room. So ma'am, it's all about me. That is. Thank you so much. Have a nice day, ma'am. Thank you so much, but my dear, introduction should not be that lengthy. ठीक है, introduction should be very short and specific. It should be very simple, it should be very short and specific. ठीक है, because the interviewer wants to finish all the things. He wants to know about you in a very short span of time. Maybe there are multiple people waiting out there. Maybe he is in hurry. Maybe he might get some interference in that course of interview. So always try to wind up your interview within a short span of time. Don't stretch your interview whenever you are giving your introduction. Don't stretch it unnecessarily. Okay, use of extra words will somehow stretch it, so try to avoid these extra words. All right, yes, Pritha, over to you, my dear. After Pritha, Naresh will say. After Naresh, Janvi will say. Okay. Good evening, ma'am. My name is Preetha. I am from
West Bengal, Bashirat. I read in class 7 when in Media High School. Yes, sir. My hobby is reading books and gardening. Gardening. Ma'am, I cannot got this. What's the stress? Actually, it shows that you have either you have not paid attention during the session which I was taking, or you are still confused at what to say. Always keep in mind, if you want to note down somewhere, my dear. First, greetings, good evening. Second, your name, good evening. My name is Pritha. Third, about your location, that I belongs or I am from. आप इसमें भी लोकेशन के लिए भी तीन तरीके हैं बोलने के. फर्स्ट, आई एम फ्रॉम कोलकाता, ये पहला है. दूसरा है, आई एम बोर्न एंड बॉट अप इन कोलकाता, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस. जैसे कि मैं बोलूंगी, आई एम बोर्न एंड बॉट अप इन रांची, झारखंड. तो यू हैव टू से दैट आई एम बोर्न एंड बॉट अप इन कोलकाता, जो भी जगह का नाम है, बारासात और जो भी. ठीक है. थर्ड, आई बिलोंग्स फ्रॉम आई बिलोंग्स फ्रॉम कोलकाता, बारासात. ठीक है. ठीक है. द नेक्स्ट इज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. ये भी एक वर्ड है. Okay, Naresh, it's fine. Naresh, let me tell you, tomorrow the class timing is 5, not 5:30. It's 5. All of you, please let me tell you that tomorrow the class timing is 5, not 5:30. So please join on time. All Ma'am, what right. is So the time today? This yes, Dayavati, you were saying something. Yes, Dayavati. ma'am. What is the time today? This Today the session. time was fine. Today the session was 5:30 and you have joined at the right time, my dear. But from Okay. tomorrow onwards, the timing for the class is from 5. Understood? Yes, ma'am. Thank you. Because there are students who are calling me and they're saying that, ma'am, if you can arrange the classes from 5, we can join the session. So I think nobody has any problem. We can join the session. You people can join the session from 5 p.m. Understood? All right. So what I was saying, that first of all you have to three ways to say from where you belong. So I am from Ranchi, Jharkhand. ये पहला तरीका हुआ. Second, I am born and brought up in Ranchi, Jharkhand. ये दूसरा तरीका हुआ. Three, I belongs to Ranchi, Jharkhand. ठीक है, मतलब मैं इस पर्टिकुलर जगह से बिलोंग करता हूँ. अंडरस्टूड. तो इसको बताने के तीन तरीके हो सकते हैं. अब आपने लोकेशन बता दी है. नाउ कम टू योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन. आई डिड माई ग्रेजुएशन इन मास कम्युनिकेशन वीडियो प्रोडक्शन. मैंने अपनी ग्रेजुएशन. अगर आपके पास एक से ज्यादा डिग्री है, ठीक है, तो आप बोलोगे आई हैव मल्टीपल डिग्री. द लास्ट आई हैव मल्टीपल डिग्री एंड आई एम पीएचडी स्कॉलर. ठीक है. अगर आप बोलोगे कि मतलब मेरे पास मल्टीपल डिग्री है, आई एम डबल ग्रेजुएट. If you want to specify your degrees, that I'm double graduate and recently I have completed this course. I have completed my PhD in this with this thesis. वर्क एक्सपीरियंस की बात करो. अगर नहीं है तो सिंपली बोलो आई एम अ फ्रेशर. और अगर है, जैसे टीचिंग का है, सॉफ्टवेयर डेवलपर का है, एंकर का है, कुछ का भी है, जिसका भी, जैसे मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो मैं बोलूंगी कि फॉर लास्ट 2 years आई एम वर्किंग एज अ टीचर. आई हैव वर्कड एज अ फ्रीलांस टीचर. आई हैव वर्कड एज अ प्राइमरी टीचर फॉर ओवर 5 years. तो ये चीजें आपको एड ऑन करनी है. Now come to your hobbies. So my biggest hobbies is I love traveling. I love meeting new people. I love to explore new places, new food, new habits. And what is my biggest strength? My biggest strength is that I don't hesitate to work. My biggest strength is that I love to work in deadlines. None of my work got pending, and I never say no to any work. ठीक है. स्ट्रेंथ, आई एम लिटिल बिट इमोशनल. स्ट्रेंथ में ना कोशिश करो ऐसी चीज बताओ जो सामने वालों को डर नहीं लगेगा. अब आप बोलोगे कि मैं बहुत चिड़चिड़ी हूँ, आई एम क्वाइट इरिटेटिंग, तो ये सही नहीं रहेगा. ठीक है. तो स्ट्रेंथ, वीकनेस भी ऐसा ही बताओ जो उसको सामने वाले को लगे कि अरे ये क्या वीकनेस है. वीकनेस बोलो कि आई एम लिटिल बिट इमोशनल. आई डोंट फाइंड एनी वीकनेस इन माई सेल्फ, बट येस समटाइम्स आई गॉट इमोशनल ऑन सम मोमेंट. ठीक है. चलो, अब नेक्स्ट कौन बताएगा? मेघा. मेघा तो बता दी है. रूपाली.
कीर्ति ने भी बता दिया। कनिका, कनिका, हैव यू गिवन योर इंटरव्यू? यस, उद्धा ने भी दे दिया, कीर्ति ने भी दे दिया। विकास, चलो Yes, विकास, ma'am. ओके। विकास, आर यू देयर? गुड इवनिंग विकास। नहीं कनिका, मैं 5 बजे से नहीं पढ़ाती थी, कल से 5 बजे से ही पढ़ाऊंगी, ठीक है? कल से यू ऑल हैव टू ज्वाइन फ्रॉम 5 PM। यस Okay, ma'am. विकास, यस विकास, चलो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विकास। Okay, ma'am. 1 minute. I can. Um, my name is Charles Kumar Yadav. Uh, now I am do work in nearby loaded stall. After that, I want to become आई lawyer. एम गेटिंग completely getting lots of sound from your background विकास, so you have to, whenever you have to join the classes now, please try to keep in a quiet place. Megha, sorry Megha, not what, Rupali, Yes, ma'am. are you able to give your introduction right now? Ma'am, am I audible? Yes, you are perfectly audible, dear. Okay, ma'am. Thank you, ma'am, for giving me this golden opportunity to introduce myself. So, good evening, ma'am. I am born and brought up in New Delhi. My name is Rupali Singh. I have completed my 10th and 12th from Government College Senior Secondary School and currently pursuing Integrated Teacher Education Program from Shyama Prasad Mukherjee College, University of Delhi. Now, I'd like to tell you my hobbies. So, I love anchoring, public speaking, and reciting poems. Now, I'd like to tell about my strength. I'm very pessimistic, dedicated, hardworking, energetic person, and always keen to learn about new things. Thank you. Very good, very well said, very well, I must appreciate, very good. All right, this is what I'm expecting from all of my students, that you have to be very clear that what are you going to state in your interview. So just like Rupali, you all have to prepare yourself. All right, so preparation की बात हो रही है तो पहले हम ये जान लेते हैं, whenever you are going for an interview, आपको ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको पहले से ही you have to prepare, प्री हैंड, आपको ये प्री हैंड प्रिपरेशन की जरूरत है। क्या ऐसी चीजें हैं? देखिए, द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है, ये 5 चीजें, उसके अलावा इन 5 चीजों, ये तो 5 चीजें आपको इंटरव्यू में जाके करनी है ना, इसके पहले आपको क्या तैयारी करनी। तो सपोज आपको कॉल आ गया कल, भाई आपको इंटरव्यू अटेंड करनी, तो अब आप क्या करोगे? आपके पास आज पूरा टाइम है, नहीं भी है, बिजी हो तो 1 घंटे का टाइम निकालो। अब ये है इंटरव्यू प्रेप चेकलिस्ट, मतलब कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए एक चेकलिस्ट बनाओ, ठीक है? व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू प्रिपेयर for a successful interview. So the first thing is you have to research about the company. If you are going for a teacher's interview, you have to research about the company, about the school policy. What are you can also, मतलब आप बहुत हिस्ट्री में जा सकते हैं कि कब स्कूल शुरू हुआ, स्कूल का लोगो, स्कूल का मोटो क्या है, स्कूल कितना सक्सेसफुल है, इसके बारे में जानो। रीड अबाउट द कंपनीज कल्चर, स्कूल का जो है, अगर आसपास के कुछ लोग हैं, स्कूल के फेसबुक प्रोफाइल है तो उसमें सर्च करो, स्कूल के कल्चर के बारे में जानने की कोशिश करो। अगर कोई कंपनी में ज्वाइन करना चाह रहा है तो कंपनी के कल्चर के बारे में जानने की कोशिश करिए। चेक ऑन द कंपनीज ड्रेस कोड, ऑब्वियसली अगर आप स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ड्रेस कोड जरूर पता करना। अगर आप कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहां का भी ड्रेस कोड ट्राई टू फाइंड आउट, मतलब कि ये आपको गूगल से मिल सकता है, ये आपको अपने, अगर उस कंपनी में कोई काम करता है तो वहां से मिल सकता है। Plan to arrive on time. Yes, this thing you have to be very sure and you have to be punctual. You have to arrive on time for your interview. नहीं तो फिर आपका impression गया। First impression is the last impression. Let me tell you that. Ask for who will be attending. ये पूछ भी सकते हो, नहीं भी पूछ सकते हो। ये जनरली इंडियन कल्चर में इट इज नॉट अलाउड कि आप पूछो कि कौन कौन लोग इंटरव्यू अटेंड कर रहे हैं।
ठीक है। बट अगर आप बहुत मतलब बहुत कंपनी बहुत ब्रॉड माइंडेड है, कंपनी बहुत बड़ी है, बहुत ऑर्गेनाइजेशन है, सो यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन, लुक अप द अटेंडेंस ऑन लिंक्डइन, अगर कौन कौन अटेंड कर रहा है। जैसे कि आपको पता चला कि प्रिंसिपल ले रही इंटरव्यू, तब आप प्रिंसिपल के प्रोफाइल पे जाके देखो उनकी चॉइस क्या है, उनका प्रोफाइल क्या है, वो कैसे हैं, मतलब उनका उनकी उनकी पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करो। थिंक अबाउट एग्जाम्पल्स ऑफ वर्क यू हैव डन, ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ वर्क यू हैव डन। तो ये सोचो, अब आपको अपने बारे में काम करना है कि आपने किस तरह का काम किया, उस काम को कैसे रिप्रेजेंट करना है कल आपको इंटरव्यू के सामने। फिगर आउट द मैट्रिक्स दैट ड्राइव योर वर्क, उन चीजों के बारे में काम, उन स्केल्स उन मैट्रिक्स के ऊपर काम करो जो आपको आगे बढ़ने के लिए, आपके काम को प्रोत्साहित करता है। ठीक है। आफ्टर द इंटरव्यू सेंड अ थैंक यू नोट। ऑफ कोर्स आपको एक मैसेज आया होगा या ईमेल आया होगा या कॉल आई होगी। तो अगर कॉल आता है तो आपको वर्बली थैंक्स बोलना है, अगर मैसेज या ईमेल आता है तो आपको एप्लीकेशन का जवाब देते हुए ही थैंक्स बोलना है, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट माई सेल्फ एज एन एप्लीकेट फॉर सच अ ह्यूज कंपनी और सच एन enormous और सच अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। सो डोंट फॉरगेट टू से थैंक यू, हमेशा थैंक यू जरूर बोलो, वेदर यू आर सेइंग इट ऑन कॉल verbally और वेदर यू आर सेंडिंग अ मैसेज और एन ईमेल, बट डोंट फॉरगेट टू डू दिस। सेकेंड, अब और क्या है, एक एक और है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। हाँ, नाउ अब नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ कंपनी और हाउ कैन यू enhance योर परफॉर्मेंस। सो what do you want to work at your company, why do you want to work at your company। ठीक है। अगर इस सवाल का जवाब कैसे दिया जाता है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि आप मेरे ही कंपनी में क्यों काम कर रहे हो या आपने अपनी जो कंपनी है उसमें क्यों नहीं काम करना चाहते हो, why do you want to work at our company, मतलब आपको हमारे इन डीपे से जुड़ना क्यों है, आपको हमारे स्कूल से क्यों जुड़ना है, आपको हमारी कंपनी से क्यों जुड़ना है। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू टेल देम व्हाट यू लाइक अबाउट द कंपनी। ठीक है। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि कैसे ये कंपनी जो है लास्ट के 2 साल में, आपको रिसर्च करके जाना पड़ेगा 2 साल में इस कंपनी ने कितना प्रोग्रेस किया है। ठीक है। इस कंपनी के क्या स्टैटिस्टिक्स रहे हैं, क्या प्रॉफिट कमाया है कंपनी ने, उसके एम्प्लॉयज का क्या कहना है, इसके एम्प्लॉयज का बहुत अच्छा रिमार्क्स है इस कंपनी का, हर जगह लिंक्डइन पे इस कंपनी की बहुत अच्छी रेटिंग्स है। अगर आप स्कूल जा रहे हो तो स्कूल का परफॉर्मेंस बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई 10th एग्जाम में कैसा है, टीचर्स कैसे हैं, वहां के स्टूडेंट्स जो एलुमनाई है वो कैसा रिमार्क्स देते हैं, स्कूल का जो फेसबुक प्रोफाइल है उस पे कितने फ्रेंड्स है, उस पे कितने लाइक्स मिल रहे हैं। तो ये चीज आपको रिसर्च करके जाना पड़ेगा और उसे का यूज करना जब आपसे ये सवाल पूछा जाए कि व्हाई डू यू वांट टू वर्क विद अस। ठीक है। तो यू हैव टू टेल मोर एंड मोर अबाउट देम। कोई ऐसी चीज बता दो जो उनको उनके बारे में नहीं पता है, कि सर आपको पता है हिस्ट्री में ये स्कूल इतने उस वक्त जो है 300 बच्चे थे, एंड आई एम वेरी enthusiastic टू नो दैट हाउ कम फ्रॉम दैट, from 300 student, how come the school has turned over to 3000। So it is really a remarkable journey that is handled by this organization, so I'm really want to work this organization। रिलेटेड इट टू लॉन्ग टर्म करियर गोल्स, हमेशा यही प्रेजेंट करो कि आपको लंबे मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना है कंपनी के साथ। ये नहीं कि आज ज्वाइन किया भाई 6 महीना देखते हैं काम करके, उसके बाद सही लगा तो ठीक, फिर दूसरी कंपनी में काम करेंगे। वो आप दिमाग में रखो कि अगर सब कुछ रहा, वर्क एनवायरनमेंट सही रहा, लेकिन बोलने की क्या जरूरत है। हमेशा कोई भी कंपनी में जाओ तो ये सोच के जाओ कि हमको जो है एक लॉन्ग टर्म करियर गोल के हिसाब से ही जाना, मुझे इस कंपनी में लंबे समय के लिए टिकना है। ठीक है। बिकॉज एवरी वन टू हैव टू अचीव देयर करियर गोल। आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा थोड़ी कि 6 महीना जिसमें काम किया 6 महीना उसमें काम किया, आपको भी तो कहीं ना कहीं अचीव करना ही है ना। हाँ, कुछ ना कुछ अचीव करना ही है लाइफ में। तो ये चीजें आपको बहुत ध्यान में रखनी है। दूसरा है एग्जाम्पल, देखो यहाँ एग्जाम्पल दिया, सर it is a great privilege for anyone to work in a reputed company like yours. When I read about your company, I found that my skills are matching your requirements। जब मैंने आपकी कंपनी के बारे में पढ़ा
जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं बोलोगे। कि अगर आप चाहते हो कि जैसे कंपनी का मोटो है बिगिन, जैसे कंपनी का कुछ भी, जैसे कि वी नीड टू एक्सेल, तो जैसे कि आप बोलो कि एज द कंपनी लोगो सजेस्ट, एज द कंपनी मोटो सजेस्ट दैट वी बिगिन, वी appreciate the skills. So I think my skills are matching with your requirements. I also like to appreciate the skilled people, so where I can showcase my all educational skills to contribute to the company growth. So this is a basic answer that you people can give. Now the very next question is, अब एक अगला सवाल होना चाहिए, जो अगला सवाल जो है, जो मैंने काफी इंटरव्यू दिए हैं, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू मेरा सिलेक्शन हो ही जाता था, और मैंने जो है ना एक अपना एक नोट्स तैयार किया कि मतलब कैसे टैकल करना चाहिए, क्या क्या सवाल होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग से सवाल होते थे, जैसे कि पहले ये तो बेसिक सवाल हो गया, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ और व्हाई यू वांट टू वर्क विथ अस, ठीक है। अब जो है इंटरेस्टिंग सवाल, जो कंपनी जो ट्रिकी क्वेश्चन पूछती, पहला, व्हाई शुड वी हायर यू, हम आपको क्यों हायर करो। चलो आपने हमें बता दिया कि आप हमारी कंपनी में क्यों काम करना चाहते हो, हमारी कंपनी तो बहुत अच्छी है, बट व्हाई वी शुड हायर यू, आपको मैं क्यों हायर करूं, गिव मी वन रीजन। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो जानना चाहते हैं कि आप में ऐसी कौन सी खूबी है, व्हाट इज दैट पर्टिकुलर थिंग अबाउट यू दैट यू द कंपनी मस्ट हायर यू। तो इस सवाल का जवाब आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ देना है। यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन with uttermost confidence. So you will say, well, I have several reasons to hire myself in your organization, but I'll say two. My skills and experience will be a great fit for your team and the given job description. जैसे कि अभी आपने देखा होगा, अभी वो इसमें लिखा हुआ था, जो सैंपल मैंने आपको दिखाया। दूसरा, आई एम पैशनेट अबाउट एनीथिंग एंड चैलेंजिंग। थर्ड है, आई एम फॉरवर्ड थिंकर, embrace change positively, I never complain and I'm always hungry to learn. So जब भी आपसे कोई पूछे why should we hire you, so always be ready for this question. दूसरा ट्रिकी सवाल, तीसरा ट्रिकी सवाल हो सकता है, हाउ डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, अगले 5 साल में। ये आपसे पूछने का उद्देश्य है कंपनी का, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन टू आस्क दिस क्वेश्चन, क्योंकि कंपनी आपके लॉन्ग लॉन्ग टर्म गोल को जानना चाहती है कि आप आने वाले 5 सालों में, हो सकता है कि वो पूछे कि व्हाट, हाउ डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट ईयर, इन नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स, अगले 2 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हो। तो आप 2 साल बोले, नेक्स्ट ईयर बोले, 5 साल बोले, 10 साल बोले, ठीक है। आपको ये तैयार रहना है और आपको बोलना है, इन अपकमिंग years I would have more responsibility, I would have more responsible, must have completed several training and development programs to enhance my skills and to upgrade myself। मतलब कि आने वाले कुछ साल में मैं अपने आप को और बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल मानती हूँ, ठीक है। मैंने इससे बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को कर लिया है, जो मेरी स्किल्स, मेरे अंदर जो कौशल है और उसको बढ़ाने के लिए मुझे हेल्प करे, और मैंने आने वाले सालों में अपने आप को अपग्रेड ही करूंगी, आने वाले सालों में मैं अपने आप को इम्प्रोवाइज करूंगी, अपने आप को अपग्रेड करूंगी, ठीक है। दूसरा सवाल जो हमेशा पूछा जाता है सैलरी के बारे में, ठीक है, कि व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन। तो एक्सपेक्टेशन के लिए कभी भी फिगर्स में नहीं बताना चाहिए, जैसे कि ठीक है गिव मी 5,000 और गिव मी 10,000, नहीं। इसके लिए भी जो है, यू देर आर मल्टीपल, मतलब मल्टीपल वेज टू आंसर, मतलब बहुत ही पोलाइटली जो है वो उसका आंसर दिया जाता है, दैट व्हाट इज द सैलरी एक्सपेक्टेशन। तो आप पहला चीज तो यही बोलो कि जो लिखा है, जैसे कि कोई भी सैलरी में लिखा रहता है कि आपको 20,000 मिलेंगे, तो अगर कंपनी फिर भी आपसे पूछती है कि व्हाट इज द सैलरी एक्सपेक्टेशन, ठीक है, तो आप बोलो कि आई सॉ दैट द जॉब डिस्क्रिप्शन सेड that the salary ranges from 20 to 30K. So is it still in the case? So I would align with that. अगर मान लो कि वो बोलता है कि नहीं, आई रियली वॉन्ट टू, मतलब कि वहां पे स्पेसिफाइड नहीं है, इट इज नॉट स्पेसिफाइड दैट हाउ मच सैलरी दे आर गिविंग, हाउ मच सैलरी दे आर ऑफरिंग, इट इज टोटली बेस्ड ऑन योर इंटरव्यू एंड योर स्किल सेट, योर
your experience. So you will say my salary expectation is totally aligned with my skills and my experience, and rest what will be the best of industry, I'll appreciate that, but आई एम ओपन फॉर नेगोशिएशन. ठीक है, मतलब कि मेरी सैलरी एक्सपेक्टेशन मेरे एक्सपीरियंस और मेरे स्किल सेट के ऊपर रिलाई करती है. ठीक है, सो जो भी इंडस्ट्री एज पर इंडस्ट्रीज नो, मतलब कि जो भी एक बेसिक इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है मैं उससे खुश रहूंगी, लेकिन फिर भी आई एम ओपन फॉर नेगोशिएशन का मतलब होता है कि फिर भी आई एम एबल टू नेगोशिएट. मतलब ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि मैंने तो 30-35 हजार सोचा था तो मुझे 50 चाहिए. नहीं, मैं आई एम ओपन फॉर नेगोशिएशन, मैं उससे कम भी हो सकता है, लेकिन आपको डायरेक्टली ये नहीं बोलना है. आपको यू हैव टू आंसर इट इन अ पॉजिटिव मैनर. अब एक लास्ट सवाल होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने उन्होंने कुछ पूछा और आपको उसका जवाब नहीं पता है, यू डोंट नो द आंसर, तो आप क्या बोलोगे? आई डोंट नो. यही बोल रहे नॉर्मली लोग बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं मैम, आई डोंट नो व्हाट इज द आंसर. नहीं, इसको भी एक तरीका होता है. देयर इज अ प्रॉपर वे हाउ टू हैंडल दिस. सो in this case you will say, I haven't had an opportunity to this area. However, I certainly eager to learn and explore more about it. ठीक है, I intervene that I don't have adequate information in this particular area, so I definitely want to know more about it. तो ये एक तरीका है बताने का कि भाई मुझे इस सवाल का जवाब नहीं हो आता है, लेकिन मैं इस फील्ड के बारे में जानकारी रखने की या जानकारी लेने की पूरी इच्छुक हूँ. ठीक है, तो ये आज के लिए है. इस तरह के सवाल होते हैं इंटरव्यू में और आपको इनको पॉजिटिवली आंसर देना होता है. हेजिटेशन बिल्कुल अलाउड नहीं है, बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए. अगर इंटरव्यूअर को पता चल गया कि आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, गया, नहीं होगा सिलेक्शन. ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग और uttermost thing that you required to face any interview is uttermost confidence. बहुत ज्यादा आत्मविश्वास की जरूरत है, क्योंकि कुछ भी बोलोगे वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे ना, तो सामने वाले को भी लगेगा कि यार चलो, दिस पर्सन हैज दैट कॉन्फिडेंस कि ये मेरी टीम को अच्छे से हैंडल कर देगा. ठीक है, सो यस, इट्स टाइम टू वाइंड अप आवर क्लास. आई होप सो यू पीपल लाइक द क्लास. यस, आई एम ओपन फॉर द फीडबैक. I hope so the class was fruitful to everyone, fruitful for everyone. Yes, Thank you ma'am. so much, Moika. Thank you so much, Dayavati. Yes. So yes, tomorrow you all have to join by 5 p.m. ठीक है, कल से आपकी क्लासेस 5 p.m. में होंगी. आपको 5 बजे लॉग इन करना है. ठीक है, सब लोग प्लीज बी ऑन टाइम. थैंक यू सो मच, दयावती. Please be on time. It's time to say goodbye and see you tomorrow at 5 p.m.